काफी candidates थे who were requesting कि they are going to appear in the exam, the mature candidates. So any one of them can volunteer for these stations today, for the TOACS stations. Okay, let me check. Dr. Awais, Dr. Awais, Dr. Sana, Dr. Tayyeba, Dr. Mishal. अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum salam. सर डॉक्टर सना। Okay, Dr. Sana, let's do the first station. ओके सर जी। Okay, kindly read the scenario. Yes sir. 67 years old female presented with complaint of lower back pain since 1 year, which is gradually increasing such that patient can now walk for just a few steps. Can you read the radiology, interpret them? Yes sir. This is on my left side. This is an X-ray lateral view of lumbosacral spine that is showing L L5 L4 L5 vertebral level anterior spondylolisthesis, and there is a decreased disc space in L5 and S1 vertebral body disc level, and remaining there is no positive findings. And on the right side there is the implant. Yes sir. Let's stick to the picture number 1. So your Okay. diagnosis is? Sir, interior spondylolisthesis at the level of L4 and L5 vertebral bodies. So how do you grade this pathology? Sir, grade. This is grade 1 in lateral view. Okay, कैसे grade करते हैं हम इसको? What is the Sir, it criteria? depends. Yes, sir. It depends upon the interior displacement of the vertebral body above on the below. And sir, less than 25 is 1, 25 to 50 is 2, 50 to 75 is 3, and greater than 75 to 100 is grade 5. So spondylolisthesis. और अगर Okay, पूरी vertebral body में स्पॉन्डाइलोप्टोसिस हो जाती है सर वो. all right, good. So how do you classify different type of listhesis according to the etiology? So they are of sir that is of ischemic type, degenerative है sir, traumatic है sir, और past interactive और sir ischemic degenerative sir सर बाकी भूल गई हैं, सॉरी. ischemic degenerative और All right, इसमें और क्या investigations आप कर पाएंगे? जी सर. सर और इन्वेस्टिगेशंस हम डायनामिक एक्सरे डायनामिक व्यूज हैं, फ्लेक्शन इन एक्सटेंशन एंड ओब्लीक व्यू फॉर द टू सी द पार्ट्स फ्रैक्चर स्कूटी डॉग में सर पार्ट्स फ्रैक्चर देखना होता है ओब्लीक एक्सरे ओब्लीक व्यू में. डायनेमिक एक्सरे में क्या देखेंगे आप? सर हमने डायनामिक एक्सरे में अनस्टेबिलिटी देखनी है कि ये ग्रेड बढ़ जाता है या कम रहता है सर जी. डायनामिक फ्लेक्शन क्या कट ऑफ होती है इसमें मेजरमेंट इन द फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन? सॉरी सर मुझे कट ऑफ वैल्यूज नहीं पता. ओके, और कोई इन्वेस्टिगेशन इसमें आप करवाना चाहेंगे? सी द एज ऑफ द पेशेंट. 67 इयर्स फ्रैक्चर हो गया और
डायनामिकली उसके और सर MRI लंबोसैक्रल स्पाइन और स्पाइनल स्टीनोसिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, सर वर्टिब्रल बॉडी की ना हमने वो देखनी है ऑस्टियोपिनिया के लिए CT करवाएंगे सर जी। उसके लिए क्या करवाते हैं ऑस्टियोपिनिया देखने के लिए? सर बोन स्कैन, सॉरी बोन स्कैन और CT में एनाटॉमी को देखने के लिए, और एक्सियल व्यू में हमने वो देखना होगा सर इसका डायमीटर ऑफ पेडिकल, और उसको मेजर करना होगा रॉड और स्क्रूज को जो प्लांट हमने डालना है तो। और जी सर। All right. So, यस how will you manage this patient? sir, first of all, I will counsel the patient regarding the disease process, and then admission करना है सर, prepare करना है for the surgery, and I will give lumbar belt for further सर immobilize करने के लिए पेशेंट को, and then सर उसके बाद anesthesia fitness, and then उसके बाद सर हमने सर एनेस्थीसिया में अगर विलिंग है पेशेंट और सब प्रिपेयर्ड है, फिट है सर्जरी के लिए, देन फिर हमने एनेस्थीसिया में इन्फॉर्म करना है इम्प्लांट के लिए, और सर फिर उसके बाद हमने पेशेंट को सर शिफ्ट करना है सर OT में, और फिर हमने सर सर्जरी करनी है सर। Okay. Hold on. Dr. Sanam, what are the indications why you are operating this patient? Is there any option of conservative management? सर अगर ग्रेड 1 पे हम कंजर्वेटिव, अगर अगर ग्रेड 1 हो तो सर हम कंजर्वेटिवली पेशेंट को लेकर चल सकते हैं सर, और एज अगर उसको पेन इंट्रैक्टेबल पेन ना हो पेशेंट को तो So, in this case, करते हैं। particular case, you are going to operate the patient. यस सर। Can you tell me the different surgical options? यस सर। सर आई विल डू द fusion procedure, instrumentation and fusion for this patient, and yes sir, fusion and instrumentation, yes, सर अगर जो सिंगल डिस्क स्पेस लॉस्ट है, इसलिए हम डिस्क में सर रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं हमारे पास सर। वैसे इसमें इंटीरियर लंबर इंटर बॉडी फ्यूजन होता है, पोस्टीरियर लंबर इंटर बॉडी फ्यूजन और ट्रांसफॉर्मिनल लंबर इंटर बॉडी फ्यूजन होते हैं सर। और सर और ये साथ हम फ्यूज कर देंगे विद रॉड एंड स्क्रूज के साथ सर पेशेंट को। हर पेशेंट में आप इंस्ट्रूमेंटेशन यूज करेंगे? नहीं नहीं सर, हर एक में नहीं यूज करेंगे, जिसमें हमने स्टेबिलिटी के लिए पेशेंट को वो करना, स्टेबलाइजेशन हमारा मेन हो ताकि फ्यूजन अच्छे से हो जाए, तो इसलिए फ्यूज करना है सर हमें। इस केस में व्हाट इज द मेन इंडिकेशन और गोल ऑफ सर्जरी? इज सर इट गोल ऑफ सर्जरी, स्टेबिलिटी? सर गोल ऑफ सर्जरी इज टू सर प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज को रोकना है, इसलिए सर हम कर रहे हैं। What is the main problem with the patient right now in this scenario? सर सर कैन नॉट वॉक फॉर जस्ट अ फ्यू स्टेप। इसको हम क्या कहते हैं? क्लॉडिकेशन सर। Okay, so main issue with the patient is right now क्लॉडिकेशन है सर। myelopathy. माइनोपैथी। Okay, now read the second X-ray. सर सर this is a lateral view of the lumbar spine that is showing implant, and सर इसमें rod and screws fixation है, post rod and screw fixation with intervertebral disc सर, fusion intervertebral body fusion devices हैं सर इसके अंदर। So, what kind of procedure is this? इसका नाम क्या है procedure का? Sir, if it is from one side, this is called tree leaf. If from both sides, it is called pea leaf. अगर सर अगर इसमें दोनों साइड से हम जाएंगे, आपको क्या नजर आ रहा है इसमें? सर अपर पे तो सिंगल नजर आ रहा है केज, और नीचे दो नजर आ रहे हैं सर। And नीचे? सर there are two cages in So that is L4 pillow. side level. Yes sir, pea leaf.
Okay, what could be the possible complications of this procedure? Yes, sir. So, so पहले सर nerve root damage and सर during this traction जो है जब तो excessive traction on the other nerve root and so CSF leak and displacement of the screws and displacement displacement of the screws, CSF leak and wound infection, sir. What is the most common complication of this procedure? Most common complication of this procedure. Sorry, sir. Most common. Okay, all right. Yes, sir. Dr. Sana, you did very well. Apart Sir. from a few questions, which Yes, were sir. obviously a bit difficult, you did Yes, sir. well. Okay, so this is a very important topic, listhesis. These were the questions that I asked you. The management of the case always started from the conservative management. And as in this case, conservative management was not suitable. So you can say that because the patient is developing the gradual weakness, so surgery is a good option in this case. Um, सर्जरी पे आके यू हैव टू टेक अ ब्रेक. आपने बताना है कि we'll plan for the surgery or I'll advise for the surgery. Then let the examiner ask what kind of surgery you will perform. In that you have to just name what kind of surgery you will perform. Then the next question would be tell the surgical steps. So let the examiner ask the questions. इस तरीके से आप अपना टाइम भी सेव करते हैं. You are extending it, and plus the number or ratio of your correct answers increases. ओके, अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना भूल गया कि at the level of L4 and L5, as in this case there was a listhesis, which nerve root would be compressed? Yes, So sir. Dr. Sana, So, this is sir L4 and L5. L4 and L5 पे अगर listhesis है तो कौन सी nerve root compress होगी? Sir, exiting nerve L4. Sorry, Exiting nerve L4. L4, exactly. Yes, Nice. yes, sir. So, to understand it, you have to understand that how the nerve roots are basically located inside the canal and in the foramina. So, let's try to understand it. In this picture, as we can see, let's suppose this is the level of L4. The L4 vertebral body को हम देख रहे हैं, and L4 nerve root is going to pass through the canal. As in the case of listhesis, the main compression comes from the superior facet, which is compressing the nerve root that is exiting at the same level. So if L4, L5 listhesis, the more there will be compression of the L4. The listhesis or the spondylolisthesis is more common at the level of L5 and S1. So usually it is the L5 nerve root which gets compressed. सॉरी सर, लास्ट में अपने L5 का, L4 नहीं? L4. I'm telling कि L4, L5, S1 listhesis is the most common, जिसमें L5 के nerve root compression के symptoms से patient आता है. In this case, L4 will be compressed. Dr. Sana ने बिल्कुल सही बताया. Okay, so now in the same way, अगर disc herniation होती है patient को, तो let's understand it कि if the disc is medial or paramedian, तो the nerve root, the lower level, for suppose this is L4 and this is the L5. This is the disc between L4 and L5. So if the disc is median or even paramedian, so it is going to compress the lower level L5. L4 and L5 disc herniation is going to compress the L5 nerve root. But if the disc is lateral or far lateral,
it is going to compress the nerve root that is exiting at the that level. So that would be L4 nerve root. ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इन एग्जाम दिस इज अ वेरी इजी एंड वेरी बेसिक कंसेप्ट, बट वहां पे बिकॉज ऑफ एग्जाम की एंजाइटी की वजह से वी आर अनएबल टू आंसर इट, एंड जिसपे जो एग्जामिनर है काफी हमें खींचना शुरू कर देता है. सो अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली इफ यू आर डूइंग द डिस्केक्टमी, सो अगर L4 L5 की डिस्क पे हमें काम करना है, सो विच लेवल लेमिनेक्टमी वुड बी परफॉर्म्ड? एनी वॉलंटियर? पार्शियल से L4 पार्शियल L5 और मेरी L4 की लेमिनेक्टमी हम करेंगे. एंड इन केस इफ यू आर गोइंग फॉर दी फॉर्मिनोटॉमी, तो उसमें हम L5 की जो है सुपीरियर जो है फैसेट की लेमिनोटॉमी करेंगे, फॉर्मिनोटॉमी करेंगे, सॉरी. सो दिस इज द लेटरल व्यू. अगेन ट्राई टू सी द कर्सर. Okay, this is the superior facet which is actually compressing the nerve root, or this is the far lateral disc segment which is compressing the nerve root that is exiting at the same level. So if this is the vertebral body of L4, so this is the nerve root of L4 that would be compressed here, right? So that is the basic concept. These are the grades of listhesis: grade 1, 2, 3, 4 and 5 if more than 100%. So that would be known as spondyloptosis, as Dr. Sana told. These are the different type of spondylolisthesis. Again, these are very important to remember. Solid marks hain. At least you should be able to name them: dysplastic, ischemic, degenerative, traumatic, pathologic, or the post-surgical listhesis. These are very solid marks, so you should remember them. Acha, X-ray mein another thing that we look for, that is the Scotty dog appearance. As in this picture, we can see that there is the pars fracture, which is usually seen in the ischemic type of the spondylolisthesis. Because of that, there would be superior facet will start compressing the nerve root. Okay, अब मैनेजमेंट जो लिस्थेसिस की है, इट इज a bit complicated. इसको समझना जरूरी है. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग के व्हाट इज द मेन कॉज. अब जो इसका मेन कॉज होता है, इट कुड बी टू. जैसे मैंने पूछा कि व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ सर्जरी इन दिस पर्टिकुलर पेशेंट, तो either there is the compression of the nerve root or there is the canal stenosis. जो nerve root compression होती है, that is by the superior facet of the lower vertebrae that is compressing the nerve root, or if the listhesis is more than 25%, it is going to narrow down the canal. So patient को concomitantly radiculopathy plus myelopathic symptoms हो सकते हैं patient को. जब ये कंसेप्ट हम समझ जाते हैं, तो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड गोल्स ऑफ सर्जरी क्या होते हैं. गोल्स ऑफ द सर्जरी, द फर्स्ट goal is to basically decompress the neural structures. Either it is the theca or it is the nerve root. So we need to decompress them. Now there are two ways of decompressing these neural structures. Either it is the direct way or it is the indirect way. Direct way, easy to understand, जिसमें हम लेमिनिक posteriorly approach करते हैं and laminectomy कर देते हैं. So we are basically widening up the canal. So indications for the direct decompression are central canal stenosis. Second is the herniated disc or any pathology that is compressing the neural structures. So by performing the laminectomy, we can do the discectomy simultaneously if there is any tumor, any other structure that is basically compromising the canal. So we can do the posterior approach. Third indication for the direct is to avoid the fusion. Why we are avoiding the fusion? Because it is going to cause the
इस लेवल को इमोबिलाइज कर देगी फ्यूजन. सो जो आपकी द सराउंडिंग लेवल्स होंगी, अपर और लोअर लेवल of the intervertebral bodies, that is going to get compromised, और उसमें degenerative changes, wear and tear होना start हो जाएगा. So that was the most or the more important complication of the procedure. जब हम fusion करते हैं तो adjacent level की जो disc होती है that starts to become symptomatic. That's why we can go for the direct approach. उसमें हमें fusion नहीं करनी पड़ेगी. But there are strong indications when we when we can perform the indirect decompression. If there is only the foraminal stenosis that is compressing a single nerve root, so by performing the indirect decompression, okay, indirect decompression basically means that the disc space that is reduced down, उसको हम increase कर देते हैं. So it is going to nerve root जो आपकी वहाँ पे stuck हो गई है, that is being compressed in the foramina, that would be relieved. Secondly, if the patient was previously operated, so again, now we don't want to go for another extensive procedure. So even in this case, the indirect approach is a good option. This is a very important indication. If the disc space is reduced, so just the posterior instrumentation or the direct जो आप करेंगे, डायरेक्ट डिकम्प्रेशन करेंगे आप, इवन आफ्टर दैट देयर आर हाई चांसेस के पेशेंट को जो है लिस्थेसिस would be increasing or patient can become symptomatic later on. So you need to perform some kind of fusion, interbody जो है fusion आपको करनी पड़ेगी. Whereas इसी का अगर हम opposite करेंगे तो if there is a tall disc, that is a contraindication for the fusion. उसमें हम fusion नहीं करेंगे, it would be less beneficial for the patient. Here I have given an example. Okay, let's see in the picture 1 on the left side. Basically, this is the compression over the theca by the disc. So let's see the red picture here. We have performed the indirect. We have performed here the indirect compression. We have increased the disc space, but still there is some compression over the canal. So this is going to be less beneficial. Whereas if there is the foraminal stenosis and we have performed the indirect decompression here, it is going to open up the foramina. So here it is a good procedure. All right. So first goal of the surgery was to do the decompression. Decompression में we have two options, direct and indirect decompression. दोनों की आपको indications and contraindications आनी चाहिए. Whatever the answer you give, you should have the justification for that. कि सर अगर मैं posterior कर रहा हूँ तो why I am performing the why I am doing the direct decompression. Okay. इसके बाद जो second हमारी important goal of the surgery आता है, that is the stability. For the stability, we need to perform some kind of instrumentation. अच्छा, इसमें the very important thing is the dynamic X-rays. Dynamic X-rays में if there is change of more than 3 millimeter, so that is significant. In that case, you need to plan for some kind of stability. उसके लिए आपको instrumentation करनी पड़ेगी. Other indications for using the instrumentation are listhesis more than 25%. If there is the tall disc space, जैसे हमने अभी discuss किया, if there is going to be, if there is a tall disc space, so there are higher chances of listhesis. So उसके लिए it's important to do the instrumentation. Third indication is the more than 50% of the facet broken. Not only in listhesis, किसी किस्म का भी कोई भी procedure आप कर रहे हो related to the spine, tumor निकाल रहे हैं, you are performing the laminectomies. If more than 50% of the facet is broken, there are high chances of instability in the future. So you need to do the instrumentation. And the fourth indication is obviously the pars. If the pars is not intact, as in the case of any trauma, surgery,
or even in the ischemic type of the spondylolisthesis. So you need to perform the instrumentation. Now, these are different type of fixations. If any volunteer can name them. Dr. Sana? Yes, sir. Sir, Top left पे which kind of instrumentation is this? ये कौन सा procedure है? sorry, sir. I have not seen this. This is the axial interbody fusion है ये. Yes, sir. This we can only perform at the level of L5 and sacrum. इसमें screw जो है axially apart करता है bodies को. ये कौन से on the top right? Sir, this is posterior lumbar interbody fusion with bilateral case. Okay, you picked it up very nicely even in that X-ray. ये X-ray बाज़ औक़ात अगर ये वाला X-ray दिया जाए AP view, so it is very easy to pick as there are two graphs placed. So this is the posterior lumbar interbody fusion, but sometimes they give the lateral view जिसमें आपको पिक करना पड़ता है कि if there is only one graph, so it is the lift, otherwise it is lift. Lower कौन सी टाइप है? Sir, and interbody fusion. lateral interbody fusion is again of two types, far lateral and direct lateral interbody fusion. So even names of these procedures हम क्या करते हैं, किस तरीके और question? Sir, thank you so much. Thank you. Dr. Majabi? Okay, from here, Dr. Majabin is going to continue for the next stations. Okay, so who is going to volunteer for the first station from my side? Hope everybody is doing good. Anyone? Any volunteer? Please raise hand if anyone is going to volunteer. Ji, Dr. Mustafa. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are going to volunteer for the next station? Yes, ma'am. Okay. Inshallah. Okay, so this is a 45-year-old female who presented with backache. On examination, their upper motor neuron signs in lower limbs and sensory level is at D7. Now read the scan and interpret. On the left side, this is the sagittal dorsal spine view. D2 weighted image showing the prolapsed intervertebral disc at the D7 and D8 level. Okay. Just compressing the sac. And what is this image? On the right side, this is the axial view of the same level, indicating the prolapsed intervertebral disc at that level. Okay, so your most probable diagnosis is?
thoracic disc herniation. Okay. So how common is thoracic disc herniation? Yes, ma'am. How common is thoracic disc herniation? Uh, this is more common at the 8%, ma'am, totally 8%. More common at the thoracic level, ma'am. Okay, so you are saying that if there are cases of prolapse intervertebral disc, 8% of cases are at the Yes. dorsal level. Is that what you're trying to say? No, ma'am. If the thoracic disc herniation cases are more common at the D8 level, I want to say, at the D8 level, because Why? it is the more mobile. Okay. Because the upper 7 rigid are fixed by the hips, and therefore it is more common at the D8 level. Okay. What other investigations you want to carry out? I want to carry out the CT scan of the thoracic spine, because these discs are most calcified. Therefore, I want to know that it is, if the disc is calcified or not. Okay. So how are you going to manage this patient? Okay, ma'am, इसमें हमारे पास anterior approach and or anterolateral. Why? Because we easily approach this, because that compression is from the interior side. Okay. Why not posterior? Because it is difficult to do from the posterior side due to the hindrance. What hindrance? It's, पढ़ा था मैं, थोड़ा सा ज़हन से निकल गया. Hindrance Anterior ज़्यादा approach, anteriorly होगा. Posterior तो सीधा lamina, नहीं, spinous process. lamina. Yes, ma'am, बिल्कुल, lamina के Why लिए. not posterior? मैम पोस्टीरियर से भी ना इसको करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि डिस्क एंटीरियर है. ठीक है, ठीक. Okay, so you are going to do anterolateral. Yes, ma'am, anterior, transthoracic. From which side? Right side, left side? From the left side. Why? Because of the cardiophrenic angle. Yes. How does it let you decide the left side? Why left side? Cardiophrenic angle. Because it is easier to mobilize the aorta than the vena cava. Okay. Okay, so tell me the steps of transthoracic approach in this patient. Transthoracic approach. First of all, ma'am, general anesthesia, and patient is put in the lateral decubitus position. Anything, and, any pre-op requirements that you want to arrange? Are you going to involve a thoracic surgeon, or you can do it on your own? Yes, ma'am. Cardiothoracic surgeon के साथ. Okay. Are you going to arrange a chest tube or not? Yes, ma'am. Chest tube arrange करेंगे. Okay. Any other thing? Anything else? Anything else? Chest tube intubation will be. Tube से related है. If you want to deflate the lung. Chest tube intubation will have वो होगा. Okay. ठीक है. Okay, now and tell me the steps. Okay, ma'am. इसमें a curved incision is given, starting from the as the shape of the ribs between the intercostal space.
what And level in this? What level incision would be in this patient? in the angle is confirmed by the fluoroscopy, and it is at the level of between the D7 and D10, D8, D7 and D8. No, Skin incision देके your skin incision will be where exactly? between D7 and D8. Posterior, midline, transverse incision. Curved incision. Okay. From starting from the as the shape of the ribs from which rib? Curved back. Thoracic 7 and 8 ribs. D7 and D8. So you think you are going to give an incision at the level of 7th rib and you're going to reach the D7, 8 interspace? Are you sure? Yes, ma'am. Curved paramedian incision. Curved paramedian. Following the 7th rib. Following the 7th. On the upper border of the 7th rib or lower border? Sorry मैम, इसमें ना प्रोन भी कर सकते हैं, प्रोन करके वहां से आप क्या करोगे इसमें, लेटरल पोजीशन और प्रोन? प्रोन करूंगा, प्रोन मैम. ठीक है, आप जा रहे एंटीरियर लेटरल हो और पोजीशन प्रोन करेंगे? यस मैम. मुश्किल नहीं होगी? सॉरी. यस मैम, इसमें बेसिकली जो है ना अपना कर्व्ड थोड़ा सा मिक्सअप हो गया लेकिन सर थोड़ा पड़ा हुआ टाइम हो. चलें, ठीक है, आपने इंसिशन दे दी और उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद मैम इसमें ना कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट्स होते हैं, सुपीरियर एंड लेटरल कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, उनको डिवाइड करेंगे ऑफ द लाइक नंबर. ठीक है. जो resection of the transverse process and then the resection rib from the angle to the costovertebral joint. Okay. और उसके बाद जो है ना मैम वो ठीक है. What can be post-op complications? Post-operative. मैम इसमें एक तो injury to the lungs pleura and the visceral pleura and then उसकी वजह से chest tube intubation करनी पड़ सकती है मैम. chest tube intubation वो तो मोस्ट केसेस में करते हैं. अगर आप एंटीरियरली जा रहे हो, ट्रांसथोरेसिक आपने कहा आप जा रहे हो, आप रेट्रोप्लूरल तो जा नहीं रहे, ट्रांसथोरेसिक में तो मोस्टली नीड होती है, तो आइट्रोजेनिक है. कोई और कॉम्प्लिकेशन? और मैम इसमें डैमेज टू द CSF लीकेज हो सकती है. CSF लीकेज. ठीक है. ओके डॉक्टर मुस्तफा, यू आर गुड, बट मिक्स हो रही हैं सारी जो है ना अप्रोचेस, एंड कोई मसला नहीं है. बाकी थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसकी अप्रोचेस मिक्स होती हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट 2 अप्रोचेस पे माफ नहीं किया जाएगा. ठीक है, एक ट्रांसथोरेसिक पे, एक कोस्टो ट्रांसवर्सेक्टोमी में. ठीक, ये 2 अप्रोचेस ऐसी हैं जो आपको टिप्स पे आनी चाहिए. ठीक, अब इसमें थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहले इंडिकेशंस ऑफ सर्जरी क्या होती हैं. अच्छा, डॉर्सल जो डिस्क है, इट इज वेरी रेयर, लेस देन 1% केसेस होते हैं. ठीक है, तो आपके पास अगर, ये तो खैर टॉक्स का स्टेशन था, अगर आपके पास कोई लॉन्ग केस में आता है तो आप डॉर्सल की डिस्क कभी भी फर्स्ट या सेकंड डिफरेंशियल पे नहीं रखोगे. ठीक है, आप उसे हमेशा थर्ड डिफरेंशियल पे रखोगे, स्पेशली इन यंग जो है वो पेशेंट्स में. डिजेनरेटिव में आप डॉर्सल डिस्क थर्ड या फोर्थ पे रखोगे. ठीक, बहरहाल. अच्छा, अब इंडिकेशंस फॉर सर्जरी क्या होती हैं? काफी सारी थोरेसिक डिस्क आर एसिम्प्टोमेटिक एंड इंसिडेंटल. कुछ कंडीशंस में जिनमें सिम्टोमेटिक होती हैं तो वो वही माइलोपैथी के साइंस होते हैं, रिफ्रैक्टरी पेन होती है, तो आप उसमें सर्जरी करते हो. दूसरा, कैल्सिफाइड जो जाइंट डिस्क होती है विच इन्वॉल्व्स मोर देन 40% ऑफ द कैनाल. ठीक, उसमें भी सर्जरी की इंडिकेशन बनती है. उसमें वैसे ही पेशेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में सिम्टोमेटिक ही होता है. चौथी इंडिकेशन इज सिम्टोमेटिक सिरिंगोमाइलिया एट द लेवल ऑफ हर्निएशन. अब अप्रोचेस जो हैं इसकी, दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एंटीरियर,
पोस्टीरियर एंड लेटरल अप्रोचेस, ठीक है। लेटरल फिर एंटीरियर लेटरल और पोस्टीरियर लेटरल होती है। जो दो पोस्टीरियर अप्रोचेस ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, बल्कि तीन कह सकते हैं, ठीक है। उसमें ट्रांसलेमिनर है, मतलब मिडलाइन लेमिनेक्टोमी जो करते हैं वो बहुत कम करते हैं, अब तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं काफी सारे केसेस में, क्योंकि उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं ऑफ मतलब रिस्क को आप ऑब्वियसली डिकम्प्रेस भी नहीं कर सकते हो क्योंकि एंटीरियर पैथोलॉजी है, और दूसरा यहाँ पे कैनाल वैसे ही नैरो होती है तो कॉर्ड की जो है इस्कीमिया के चांसेस भी होते हैं, और इसमें डिकम्प्रेस आपको अच्छा उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। इसके अलावा ट्रांसपेडिकुलर एंड कोस्टो ट्रांसवर्सेक्टोमी, ठीक है। पोस्टियो लेटरल ट्रांसपेडिकुलर भी मोस्टली पोस्टियो लेटरल में ही चीज आती है, तो कोस्टो ट्रांसवर्सेक्टोमी और ट्रांसपेडिकुलर अप्रोच जो है वो आपके पोस्टियो लेटरल में आता है, और एंटीरियो लेटरल में आप ट्रांसथोरेसिक करते हो। ट्रांसथोरेसिक कैन बी जो है रिट्रोप्लूरल और इंट्राप्लूरल, ठीक है। अब ये चार्ट जो है ये ह्यूमन से लिया है, इसमें हर अप्रोच की एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखी हुई है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ दी ट्रांसपेडिकुलर अप्रोच, ठीक है। ट्रांसपेडिकुलर का फायदा क्या होता है कि अच्छा, एक तो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी कैल्सिफाइड मिड लाइन डिस्क होगी तो आपको एंटीरो लेटरली जाना है, आपने ट्रांसथोरेसिक जाना है, ठीक है। पोस्टीरियर में अप्रोच की कुछ खास इंडिकेशंस होती हैं, जैसे सॉफ्ट डिस्क हो, ठीक है, लेटरल हो या फार लेटरल हो, उसमें आप जो है ट्रांसकोस्टल ट्रांसवर्सेक्टोमी या ट्रांसपेडिकुलर जा सकते हैं, ठीक है। इसमें यही चीज लिखी हुई है कि एक्सेस टू द लेटरल सॉफ्ट डिस्क पॉसिबल एट ऑल थोरेसिक लेवल्स, क्योंकि एंटीरियर ट्रांसथोरेसिक अपर थोरेसिक में थोड़ी सी टेक्निकली डिफिकल्ट होती है, तो ट्रांसपेडिकुलर अप्रोच की और कोस्टो ट्रांसवर्सेक्टोमी का भी यही फायदा है कि आप हर थोरेसिक लेवल पे कर सकते हो। इसकी एनेटमी फेमिलियर होती है, कोई आपको थोरेसिक सर्जन नहीं चाहिए होता है इसमें, प्लूरल कैविटी से आप बच जाते हो, और क्योंकि ट्रांसथोरेसिक अप्रोच में बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो इसमें जो है ऑपरेटिव टाइम कम होता है। इसी तरह से एक्स्ट्रा जो है कोस्टो ट्रांसवर्सेक्टोमी के भी यही फायदे हैं, लेटरल पैरासेंट्रल डिस्क है, सॉफ्ट डिस्क बोलना जरूरी है, ठीक है। कुछ एक्सेस मिड लाइन पे मिलता है, लेकिन कोस्टो ट्रांसवर्सेक्टोमी इज ऑल्सो अ लेटरल अप्रोच, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। इसमें मिनिमल रिस्क होता है प्लूरा ब्लीच का, क्योंकि इसमें आप 4 to 5 सेंटीमीटर ऑफ रिब निकालते हो, ठीक है, बट देयर इज अ मिनिमल वेरी मिनिमल रिस्क। अब इनका नुकसान क्या है, जाहिर सी बात है, ये एक जो है ये अप्रोचेस एक साइड पे होती हैं, तो आप वेंट्रल या मिडलाइन एक्सपोजर इन दोनों में नहीं मिलता आपको। दूसरा, कैल्सिफाइड डिस्क पे आप ये अप्रोचेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तीसरा, स्पाइनल कॉर्ड रिट्रैक्शन का मसला होता है यहाँ पे, ठीक। और दूसरा, आइट्रोजेनिक इंस्टेबिलिटी, क्योंकि ट्रांसफेसेट ट्रांसपेडिकल में इंस्टेबिलिटी इसलिए हो सकती है क्योंकि आप फेसेट और पेडिकल को इन्वॉल्व कर रहे हो। यहाँ पे इतना जो है वो नहीं होता, फेसेट पे आप नहीं छेड़ते हो कोस्टो ट्रांसवर्सेक्टोमी में, तो वहां पे इंस्टेबिलिटी का इतना रेशियो नहीं होता। बाकी सारी कुछ चीजें हैं वो हो सकती हैं, जैसे इंटरकोस्टल न्यूरल्जिया है। इसीलिए मैं जो क्वेश्चन पूछ रही थी वो तो खैर उसमें मैं इंसिशन के हिसाब से पूछ रही थी, रिब का अपर बॉर्डर होता है, आप उसकी तरफ इंसिशन देते हो, एंटीरियर लेटरल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि लोअर बॉर्डर में आपका न्यूरोवेस्कुलर बंडल होता है, ठीक। तो उस हिसाब से इसमें ये लिखा हुआ है, जब आप रिब निकालते हो, रिब का प्रॉक्सिमल 4 to 5 सेंटीमीटर, तो उसमें अगर आपने इंटरकोस्टल नर्व्स को न्यूरोवेस्कुलर बंडल को इन्वॉल्व किया तो न्यूरल्जिया हो सकता है। अब आते हैं ये लेटरल, ठीक है, मिनिमली इन्वेसिव, क्योंकि मैं सबकी डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ दो अप्रोचेस की बात कर रही हूँ। एक आपकी, ठीक है, ये वाली कोस्टो ट्रांसवर्सेक्टोमी और ट्रांसपेडिकुलर अप्रोच, और दूसरा एंटीरियर ट्रांसथोरेसिक। ये दो अप्रोचेस जो है ना, इन पे आपको नहीं फॉरगिव किया जाएगा, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। इनके फायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या है, ये भी आने चाहिए। एंटीरियर ट्रांसथोरेसिक में क्या होता है, मिड लाइन वेंट्रल एक्सपोजर के लिए सबसे अच्छा होता है, ठीक है। वाइड कॉर्पेक्टोमी भी पॉसिबल होती है, कॉन्ट्रालेटरल एक्सेस भी हो सकता है, और दूसरा आपके पास इसमें जो है वो जो कैल्सिफाइड डिस्क होती है उसके लिए बेहतरीन होता है। लेकिन आपको मजबूरी में अप्रोच सर्जन जो थोरेसिक सर्जरी की चाहिए होती है नीड, ठीक है, पोस्ट थोरेकोटमी पेन, चेस्ट ट्यूब की। अच्छा, जो दूसरी मैं बात करी थी कि इंट्यूबेट का जो मैं पूछ रही थी, वो होता है डबल ल्यूमिन, आप एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हो, ताकि अगर आपको एक साइड का लंग जो है वो कोलैप्स करना है रिट्रैक्ट करने के लिए, तो आप उसको डिकम्प्रेस, उसको जो है डिफ्लेट कर सको, ठीक है। इसका स्टीप लर्निंग कर्व है, 2 डायमेंशन विजुअलाइजेशन और मैनिपुलेटिंग, इसमें बहुत लॉन्ग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो वो आपको पता है। इंटरकोस्टल न्यूरल्जिया इसमें भी हो सकता है अगर
आपने जो रिब शेयर से आप रिब काटते हो, लोअर बॉर्डर ऑफ रिब की तरफ आपका इंजरी होता है, या आप जब इंसिशन दे रहे होते हो उस वक्त जो है वो मसल डायसेक्शन में आपका लोअर बॉर्डर ऑफ रिब पे मसला होता है, देयर कैन बी इंटरकॉस्टल न्यूरल्जिया। अब इसमें जो है ये चार्ट जो है, ये समरी जो है इसने बताया हुआ है, सॉरी, इसमें क्या होता है दूसरा कि ये पिक्चर भी योमैन से ली हुई है, ठीक है। इसमें जो अप्रोचेस हैं उसके बारे में बताया हुआ है, जैसे ये मिड लाइन में क्या निकालते हैं, लेमिना, और इतना जो है स्पाइनस प्रोसेस, जैसे स्टैंडर्ड मिड लाइन लेमिनेक्टोमी करते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपेडिकुलर अप्रोच है, उसमें इतना पोर्शन निकालते हैं, ठीक है। ये कॉस्टो ट्रांसवर्सेक्टोमी है, जिसमें आप तकरीबन 4 to 5 सेंटीमीटर ऑफ द रिब निकालते हैं, ठीक है। डी जो है लेटरल एक्स्ट्रा कैविटरी अप्रोच है, और ए से जो है वो आपकी ट्रांसथोरेसिक अप्रोच है, ठीक। तो ये आपको नाम आने चाहिए और वो दो अप्रोचेस के जो है वो डिटेल्स पता होनी चाहिए। जो ट्रांसथोरेसिक अप्रोच होती है ना डॉक्टर मुस्तफा, आपने कहा कि जिस लेवल पे डिस्क होती है आप वही लेवल के रिब निकालते हो, ये नहीं है सही, ठीक है। पहले तो आपकी पोजीशन लेटरल पोजीशन होती है, ठीक है। ज्यादातर लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, ये आपने सही कहा, ठीक है, क्योंकि मिड लाइन पे जो है लेफ्ट साइड पे एओर्टा को मोबिलाइज करना इजी होता है, लिवर बीच में नहीं आता है, तो लेफ्ट साइड पे आप ज्यादा करते हो। दूसरा, your incision should follow the upper border of the rib 2 level above the index disc, ठीक है। जैसे आपका डी 8 और 9 की डिस्क है, जैसे इस पिक्चर में डी 8 और 9 की शायद डिस्क थी, तो उन्होंने जो है जो 7th रिब है उसको जो है वो फॉलो किया है, ठीक है, उसके हिसाब से जो है वो उन्होंने इंसिशन दिया है। उसके बाद जो आप रिब कट करते हो वो भी 7th 2 level अबव द डिस्क होता है, 7th रिब आप निकालते हो, फॉर एग्जांपल डी 8-9 में अगर आपका डिस्क है तो। और जब आप उस पे आते हो, अप्रोच करते हो, फिर आगे जो है वो डिस्क जो है वो आप अप्रोच करते हो और निकालते हो, लेकिन बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो फिर भी थोड़े बहुत याद रहते हैं, लेकिन ये रिब का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको याद हो कि 2 level अबव द डिजायर्ड इंटरवर्टिब्रल स्पेस। जो कॉस्टो ट्रांसवर्सेक्टोमी है उसका इंसिशन वेरी करता है, आप मिडलाइन, पैरामीडियन, ठीक है, कर्विलीनियर, कोई भी इंसिशन दे सकते हो। पार्ट आप कितना निकालते हो, ठीक है, पार्ट ऑफ द लेमिना, और दूसरा यहाँ पे फेसेट जॉइंट, जो अपना फेसेट जॉइंट नहीं, जो कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस निकालते हो, और तकरीबन 4 to 5 सेंटीमीटर ऑफ द रिब निकालते हो। पढ़ना कहाँ से है, ग्रीनबर्ग में थोरेसिक डिस्क बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। न्यूरोसर्जरी केस रिव्यू में बहुत अच्छा है, केस रिव्यू एक है उसका, केस 117 थोरेसिक डिस्क। दूसरा कोर टेक्निक्स में जो कॉस्टो ट्रांसवर्सेक्टोमी है वो बहुत अच्छी लिखी हुई है। और तीसरा जो है चैप्टर 159 है शिमेटिक का, उसमें भी अच्छा लिखा हुआ है। असल में ये बहुत रेयर टॉपिक है, लेकिन अगर कोई पेशेंट ऐसा होता है तो वो जरूर देते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको थोड़ा सा जो है पढ़ना पड़ेगा। नो, स्पेशली उस वक्त पढ़ना पड़ेगा जब आप लॉन्ग केसेस देख रहे होंगे अपने लास्ट के डेज में। अगर कोई केस थोरेसिक डिस्क का है नियरिंग द एग्जाम, तो आपको थोरेसिक डिस्क की जो है वो सारी वो जरूर आएगा, थोरेसिक डिस्क का कोई भी केस हुआ तो उसके लिए आपको थोरेसिक डिस्क हर्निएशन आनी चाहिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? डॉक्टर मुस्तफा? नो मैम, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ठीक है। अच्छा, कोई और कुछ पूछना चाहे या आगे चले नेक्स्ट स्टेशन पे? मैम किस लेवल तक फिर थोरेसिक में हम जो है पोस्टीरियरली कर सकते हैं, मतलब D12 D11 तक तो कर सकते हैं? समझी नहीं मैं, पोस्टीरियरली मतलब? पोस्टीरियर मिड लाइन जो नॉर्मल जिस तरह हम लंबर लेमेटमी करते हैं ना, उस तरह हाँ पूछ रहे हाँ। हैं कि थोरेसिक किस लेवल तक हम पोस्टीरियरली कर सकते हैं, जो सेफ है, जो इजी। नहीं, डोर्सल में पोस्टीरियर सेफ सिर्फ तब होता है जब कोई ट्यूमर हो, ठीक है। डोर्सल में जो ट्यूमर्स हैं उन्हें आप मिडलाइन लेमिनेक्टोमी में अच्छे से अप्रोच कर सकते हो। जो डिस्क होती है उसमें मोस्टली आपको या तो ट्रांसपेडिकुलर या कोस्टो ट्रांसवर्सेक्टोमी, पोस्टीरियर लेटरल अप्रोच से जाते हो। लेमिनेक्टोमी में देखा गया है कि उसके इतने अच्छे आउटकम्स नहीं है डिस्क डीकम्प्रेशन में। ओके ओके मैम। कुछ और पूछना है या वो आगे उसमें चले? ये है कि अगर हमको उसे करते हैं तो फिर साथ फिक्सेशन साथ करनी पड़ेगी। जी, अगर मैं डोर्सल में पोस्टीरियरली करते हैं तो फिर फिक्सेशन ज्यादा करनी पड़ेगी साथ में। फिक्सेशन का भी इतना नहीं होता इशू।
देखो आप इंडिकेशन देखो, अगर फॉर एग्जांपल कोई मिड लाइन डिस्क है, कैल्सिफाइड है, तो आप एंटियोलेटरल जाओगे, ठीक है। अगर लेटरल डिस्क है, सॉफ्ट डिस्क है, तो बेहतर है कि आप कॉस्टो ट्रांसवर्सेक्टोमी करो या ट्रांसपेडिकुलर जाओ, एज ओपोज टू मिड लाइन लेमिनेक्टोमी। तो मिड लाइन लेमिनेक्टोमी को इतना फेवर नहीं करते। मैंने तो कुछ ही केसेस देखे थोरेसिक डिस्क के, और उसमें ज्यादा टीबी स्पाइन के हम लोग एंटियोलेटरली जा रहे होते हैं मोस्टली। और इस से और मैम वैस्को हमने थोरेसिक सर्जन को कब बुलाना है? जी थोरेसिक सर्जन को किस अप्रोच के लिए बनाना है थोरेसिक हाँ, सर्जन? ओपन जो आप करते हो, ट्रांसथोरेसिक जो आप करते हो, उसमें आपको थोरेसिक सर्जन की जरूरत होती है, ओके, थैंक ठीक यू है। मैम। या थोरेकोस्कोपिक अगर आप करते हो मिनिमली इन्वेसिव में, उसमें भी जो है थोरेसिक सर्जन की जरूरत होती है, ठीक है। कोई क्वेश्चन या आगे चलें? चलें नेक्स्ट केस पे चलते हैं। ओके, हु इज गोइंग टू वॉलंटियर फॉर नेक्स्ट केस? आई एम रेडी मैम। डॉक्टर हारून, ठीक है। डॉक्टर हारून, दिस इज योर सिनेरियो। A 55-year male presented with progressive weakness of all limbs. On examination, there is bilateral wasting of intrinsic hand muscles and spastic quadriceps. Now read the scan. Okay, ma'am. This is a MRI cervical spine T1 and T2 images, pre-contrast images of 55-year-old male showing there is a significant cervical stenosis, mostly the anteriorly at C3, 4, 5, 6 levels, and there is also signal changes in the cord, and डायग्नोसिस जब मैम पूछेंगे तब बताना है। नहीं नहीं, तो it is most likely suggestive of what pathology? मैम दिस इज मोस्टली सजेस्टिंग ऑफ OPLL. OPLL. What is OPLL? मैम ossified posterior longitudinal ligament. Okay. So what type of OPLL is this? मैम दिस इज continuous मैम. Continuous. Okay. So if this is OPLL, what other can be the differentials? मैम अदर most likely degenerative disc disease we can say. Okay. multi-level degenerative disc disease. Okay. Any other? And any other ma'am infective pathology less likely for the cervical and neoplastic. We can say neoplastic if we don't see the images. Okay. So after seeing the images, then I don't think it's right to say neoplastic. Or we can say. Okay. Okay. What is the pathophysiology of OPLL? Ma'am, pathophysiology exactly, I don't know, but I think, ma'am, it is there's a significant compression on that posterior longitudinal ligament, and maybe the patient having any history of trauma or any degenerative disease, and then after this, the ossification start at the level of posterior longitudinal ligament. Exactly, I don't know. Okay. So how will you manage this patient? Ma'am, first of all, I will admit the patient, and then I will tell him both treatments. First, I will give the medical treatment in which muscle relaxant and NSAID and physiotherapy. I will tell and in neck immobilization. And Will you go for physiotherapy? maybe in the conservative treatment, well, first we have to go because some patients said that I don't want surgical treatment. Then should we have to advise physiotherapy? Okay. Okay. So And if the the second treatment conservative is treatment fails, the patient is not getting better, then yes. If conservative treatment fails, then I have to tell the patient about the surgical management of this case, this disease, and in which I have to tell about the both procedures regarding from the anterior or also from the posterior. But because it is the multi-level, is more than 3 level, so we can do 3-level ACF,
and also we can do the posterior lateral mass fixation. Okay, so what would you Lateral do? mass fixation. Because it is, ma'am, actually, because in different sections I heard about 3-level ACTF, but I didn't see. What are you But going to do? This is your patient. What are ma'am, you going to do? yes, ma'am, I'm because it oldest patient, I would suggest lateral mass fixation from the posteriorly. After laminectomy. Yes, after laminectomy and no, ma'am, but now we can do laminotomy also. Today, Laminotomy. no, sorry, today laminotomy, yes, laminoplasty. Laminoplasty. Okay, so what is laminoplasty? Ma'am, in the laminoplasty, we have to drill the both facets, and then we will drill, and after drilling, we have to remove, and then we will do the procedure. Or You facet. sorry, ma'am. I mixed because in this procedure I will do a laminectomy, and after discectomy, and then I have to fix the lateral mass screw fixation. No, this is not a Laminoplasty. disc. Why did you say discectomy? Now only we will, ma'am. We will drill the posterior longitudinal ligament. Will you drill the posterior longinal ligament? Are you sure? I mean, you are trying Ma'am, to because say if that you will go posteriorly, right? yes, ma'am. You will do laminectomy. Okay. Or ma'am, or maybe safe is और I can लेमिनेक्टमी के do. बाद आपको पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट नजर आ जाएगा. लेमिनेक्टमी की बात नहीं है, लेकिन कॉर्ड अटैच करके फिर देखना पड़ेगा. तो आप कॉर्ड डिटेक्ट करेंगे. इस लेवल पे इट इज नॉट सेफ. अच्छा, क्यों सेफ नहीं है? Ma'am, because it is, ma'am, in the cervical level, and we can do the damage, because there, we will retract the theca or dural sac, so we can damage the tracts. ठीक है, कितने लेवल लेमिनेक्टमी करेंगे आप इसमें? Ma'am, 4 level, ma'am, from C3 to C6. Okay, what is the difference between standard and extended laminectomy? Ma'am, standard is from C3 to C6, and ma'am, extended is from C3 to T1. Okay. So you are going to do 4 level laminectomy and then fix with lateral mass screw. Lateral mass, yes, ma'am. Okay, and you were saying also you can go for laminoplasty. Laminoplasty, ma'am, because I have seen in the cervical tumors, we can do laminoplasty, but didn't see regarding OPLL. Okay, so how do you do But we laminoplasty? can do laminoplasty, ma'am, like this. We will do we will drill the facets, and after drilling, we will detach the lamina, and then after doing the procedure, we will fix with the mini plates. What are the types of laminoplasty? Ma'am, actually, I only see, so because when in my training, I didn't see the laminoplasty, but in our unit. But now after that, I saw 2-3 procedures, but I didn't do so. So I only know on the only one type of laminoplasty. Okay, okay. Okay, what are the poor prognosticating factors in OPLL? Ma'am, first of all, the patient is, neurological deficit may increase, and CSF leak may occur, and adjacent level Preoperative. disease. Preoperative poor Pre, prognosticating factors. ma'am, preoperative, this signal changes in the CSF signal changes in the cord. CSF signal changes. Are these CSF signal changes? Is that CSF which is Maybe in the appearing cord. hyperintense? I think, ma'am.
CSF तो नॉर्मली होता है कॉर्ड में, सेंट्रल कैनाल में। No, ischemic changes, ma'am. ओके, ठीक है। अच्छा, Ischemic और changes in the cord. ठीक है, और And other, ma'am, this is canal stenosis, cervical myelopathy. वो तो है, माइलोपैथी तो है, बट माइलोपैथी में भी Myelo- कौन सी साइन जो है वो पुअर प्रोग्नोस्टिकेटर होती है जो इसमें है? myelopathy. Hmm. सिनेरियो में ही लिखा हुआ है, I bilateral didn't get. wasting of intrinsic head muscles. This is one of the poor Wasting of agent. ठीक Yeah, है। muscle. दूसरी, Okay, okay, muscle wasting. Okay. ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स ऑफ मोर देन 2 years, तो इट्स ऑल्सो अ पुअर प्रोग्नोस्टिकेटर। Mm-hmm. ठीक है, तो ये Okay. 3-4 पुअर Okay, ma'am. प्रोग्नोस्टिकेटर्स होते हैं। अच्छा, व्हाट इज के लाइन? Ma'am, Kalen, actually, we have to draw the a line between C2 and C7, and if it is crossing, if it is crossing K line, that we have to say this is positive K line, then we have to do from the posteriorly, and if it is not crossing, then it is a negative K line, so we have to do from the anteriorly. Actually, it is regarding lordosis, So K line tells you loss of about lordosis. lordosis. Lordosis, yes, ma'am. If it is positive, what which means the K line is positive, what does it mean? Like we have to do from the posteriorly. अच्छा, ठीक है। और नेगेटिव का क्या मतलब होगा? नेगेटिव मैम वो क्रॉस नहीं कर रही, उसके पीछे है पैथोलॉजी ना, देन वी हैव टू डू अंटीरियरली. ओके, ठीक। कोई और इसके बारे में बताएगा, के लाइन के बारे में? एनी अदर वॉलंटियर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, डॉक्टर मिशाल। मैम के लाइन हम ड्रॉ करते हैं C2 से लेके उसकी जो सी कनाल के सेंटर से लेके C7 तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे उधर से उन दोनों के सेंटर पार्ट तक। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि OPLL क्या उस लाइन को क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो वो उस लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा तो वो पॉजिटिव है, और अगर वो उसको क्रॉस कर रहा है तो वो फिर नेगेटिव होता है। सही, तो उस पर डिसाइड आप कैसे करते हो? कि अगर तो वो क्रॉस कर रहा है तो फिर अगर हम पोस्टीरियरली जाएंगे मतलब वो नेगेटिव हो गया, और अगर फिर पोस्टीरियरली जाए फिर पोस्टीरियरली कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है। ठीक, 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 सही। तो डॉक्टर मिशाल सही का, डॉक्टर हारून आप थोड़ा सा जो है ना वो उल्टा बता रहे थे। ठीक है, पॉजिटिव जो लाइन है के लाइन, इट डजंट क्रॉस। ठीक है, एंड नेगेटिव जो है, इट डज क्रॉस। ओके. ठीक है, अच्छा। तो ओवरऑल यू आर गुड। 2-3 बस चीजें हैं इसमें, लेमिनोप्लास्टी को आपको रिव्यू करना पड़ेगा, उसके टाइप्स कौन से जी हैं। मैम. ठीक है, क्योंकि इसमें आप इतने एक्सटेंडेड लेमिनेक्टोमीज नहीं करते हो। ठीक है, तो बेहतर यही होता है कि अगर 3-4 लेवल हो तो आप लेमिनोप्लास्टी करते हो, तो आपको टाइप्स पता होने चाहिए। दूसरा ये, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड लेमिनेक्टोमी में डिफरेंस ये होता है कि स्टैंडर्ड लेमिनेक्टोमी C3 to C6, एक्सटेंडेड इज C2 to C7। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। तीसरी बात ये कि आपको वो प्रोग्नोस्टिकेटर्स आपको पता हो, एक तो सिग्नल चेंजेस होते हैं, 2-3 और होते हैं। एक आपका इंट्रिंसिक हैंड मसल्स की वीकनेस, ड्यूरेशन मोर देन 2 years, और सिरिंग्स अगर है उस लेवल पे, सर्वाइकल लेवल पे, तो इट इज आल्सो वन ऑफ द फोर प्रोग्नोस्टिकेटर्स। अच्छा, एक और चीज ये कि जब आप अप्रोचेस बता रहे होते हो तो आप के लाइन का जरूर जिक्र करते हो। ठीक है, ऐसे आप नहीं बोलते हो कि हम इंटीरियर भी जा सकते हैं, पोस्टीरियर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आप बताते हो कि इसमें जो है वो के लाइन क्रॉस करी है या नहीं करी है, तो उस हिसाब से आप अप्रोच डिसाइड करके उस पेशेंट में बताते हो। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। ओपीएलएल की बाकी सारी जो है वो पैथोजेनेसिस, हाँ मैंने पूछी थी। पैथोजेनेसिस में ये होता है कि हाइपरवेस्कुलर फाइब्रोसिस होती है, उसके बाद कैल्सिफिकेशन एंड देन ऑसिफिकेशन होती है। ठीक है, और ड्यूरा को इन्वॉल्व करती है। तो आप पोस्टीरियरली कभी भी जो है वो आप थीका को मैनिपुलेट नहीं करते हो। ठीक है, दूसरा जो माइलोपैथी होती है वो कॉर्ड कंप्रेशन और कॉर्ड इस्कीमिया दोनों की वजह से होती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट C3 to 4 होती है। टाइप्स जो हैं इसके 4 आपको आने चाहिए।
इसके चार टाइप्स जो हैं वो जो है कंटिन्यूअस, सेगमेंटल, मिक्स्ड और फोकल जो होता है, ये आने चाहिए। और दूसरा, क्रॉस सेक्शन में भी इसके तीन टाइप्स हैं। क्रॉस सेक्शन में ये शेप जो है, दिस इज स्क्वायर शेप, ठीक है, दिस इज मशरूम शेप एंड दिस इज हिल शेप, ठीक है। तो दिस इज स्क्वायर टाइप, मशरूम टाइप, हिल टाइप, तीन टाइप्स इसकी एक्सियल कट्स में होती है। सैजिटल कट्स में इसकी ये चार टाइप्स हैं, ठीक है। न्यूरिक ग्रेड आपको पता हो, ठीक है। न्यूरिक ग्रेडिंग और इवन मॉडिफाइड जेओए ग्रेडिंग भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि फंक्शनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग द मैनेजमेंट। न्यूरिक ग्रेड 3 और 4 में जो है, विच इज मॉडरेट न्यूरिक ग्रेड, उसमें सर्जरी के अच्छे चांसेस होते हैं रिकवरी के। बाकी न्यूरिक 1 और 2 में आप कंजर्वेटिव पे रख सकते हो। न्यूरिक 5 में सर्जरी के बाद भी जो है वो कोई फायदा नहीं होता है, तो वो मोस्टली न्यूरिक 5 में आप सर्जरी की तरफ नहीं जाते, ठीक है। के लाइन की जो बात है, ये टेबल और पिक्चर जो है ह्यूमन से लिया है मैंने, ठीक है। ह्यूमन में बहुत अच्छा लिखा हुआ है ओपीएलएल, ह्यूमन से जरूर पढ़िएगा। के लाइन ड्रॉ किस तरह करते हैं, ये जो डॉक्टर मिशेल बता रही थी, ठीक है, कि C2 से लेके C7 तक आप जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। अगर ओपीएलएल जो है वो इसको क्रॉस नहीं कर रहा तो इट इज पॉजिटिव, और अगर क्रॉस कर रहा है तो इट इज नेगेटिव। इसको याद रखने का तरीका ये है कि जो एक चीज अपने लिमिट्स को क्रॉस करी है तो मतलब वो नेगेटिव ही होगी, वो बुरी होगी, ठीक है। जो एक अपनी हद में रह रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, इस तरह याद रखो। ये चार्ट बहुत अच्छा है, योमेन से लिया है। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर के लाइन पॉजिटिव है, ठीक है, तो आप ये लेमिनोप्लास्टी या पोस्टीरियर अप्रोच करते हो, फेवरेबल होती है। एंटीरियर अप्रोचेस इतना नहीं करते हो, एज अपोज टू के लाइन जब नेगेटिव होती है, ठीक है, तो आप पोस्टीरियरली इतना अप्रोच नहीं करते हो जितना एंटीरियर अप्रोच करते हो। एंटीरियर कॉर्पेक्टोमी हो गया या एसीसीएफ हो गया, ठीक है। दूसरा के एसिम्टोमेटिक अगर है, इसमें लिखा हुआ है मॉडिफाइड जेओए स्कोर। थोड़ा सा मुश्किल होता है जेओए स्कोर याद रखना, लेकिन सिर्फ एक कट ऑफ भी बता दो अगर, कि अच्छा मॉडिफाइड जेओए स्कोर है मोर देन 15, तो आप उसको ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। एसिम्टोमेटिक और माइल्ड माइलोपैथी है तो, ठीक है। दूसरी एक और चीज के, यही सारी चीजें जो हैं आपकी सर्जिकल इंडिकेशंस में आ गई, कि जो है के लाइन के हिसाब से केनाल ऑक्यूपेशन, ड्यूरल ऑसिफिकेशन, ये सारी चीजें जो है वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं और यही इंडिकेशंस होती हैं ओपीएलएल में सर्जरी की। एक और चीज के जो है लॉर्डोसिस और काइफोसिस का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। काइफोसिस अगर होगा तो आप कौन सी अप्रोच करोगे, कोई बताएगा मुझे, अगर सर्वाइकल काइफोसिस है तो? स्टील नहीं करेंगे पोस्टीरियरली क्यों? बिकॉज मैं उसको उसको कर्वेचर को ठीक करने के लिए। कर्वेचर को ठीक करने के लिए, अच्छा। तो कैसे कर्वेचर ठीक करेंगे पोस्टीरियर अप्रोच से? पोस्टीरियर अप्रोच की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्या मैं होगी? उसकी मैं स्टील अप्रोच की इसको थोड़ा सा जो है ना ये कॉन्सेप्ट से हाँ, समझना पड़ेगा, ठीक है। जो हम्म, के लाइन का कॉन्सेप्ट है, उसी को अगर आप जहन में रखो तो सिंपल, जब के लाइन नेगेटिव है, देखें ये दिख रहा है, ये लॉर्डोटिक लग रहा है, ये काइफोटिक लग रहा है, ठीक है, जिसमें के लाइन नेगेटिव है। के लाइन नेगेटिव मोस्ट ऑफ द केसेस में तभी होती है जब सर्वाइकल काइफोसिस होती है। तो के लाइन अगर नेगेटिव हो गई, सर्वाइकल काइफोसिस हो गई, तो आप कभी भी पीछे से नहीं जाएंगे। आप हमेशा जो है नेगेटिव के लाइन में और सर्वाइकल काइफोसिस में एंटीरियर अप्रोच करेंगे, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ अप्रोचिंग posteriorly इज पोस्ट ऑफ काइफोसिस, ठीक है। तो ये सवाल पूछते हैं ओपीएलएल में। मैंने इसको तो टॉक्स में रखा है, हमने बहुत सारी चीजें जो है वो टॉक्स में इसलिए रखी हैं क्योंकि सारी चीजें लॉन्ग केस कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये चीजें आपको ऐसी हैं कि एक एक चीज इसके बारे में आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग केस में आएगा तो फिर इसी तरह सवाल से सवाल निकलते हैं, ठीक। पुअर प्रोग्नोस्टिकेटिंग फैक्टर्स मैंने बता दिए। अच्छा, न्यूरिक ग्रेड 5 और मॉडिफाइड जे अगर लेस देन 8 है, दे आर ऑल्सो पुअर प्रोग्नोस्टिकेटर्स, ठीक है। गुड आउटकम तब होता है जब मॉडिफाइड जेओए इज मोर देन 11 और न्यूरिक ग्रेड जो है वो 3 to 4 या बल्कि 1 to 4 अगर होता है, ठीक है।
एसोसिएटेड ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट भी वन ऑफ द पुअर प्रोग्नोस्टिकेटर है। तो ये 4-5 चीजें हैं जो पुअर प्रोग्नोस्टिकेटर्स हैं, ये आपसे पूछते हैं तो ये आपको आनी चाहिए। पढ़ना कहाँ से है? ग्रीनबर्ग में लिखा हुआ है, लेकिन बहुत ब्रीफ लिखा हुआ है। जो सबसे ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है, जो सारे टेबल्स और पिक्चर्स मैंने पिछली स्लाइड्स में दिखाई, वो ह्यूमेंस हैं। ठीक है। दूसरा जो न्यूरोसर्जरी केस रिव्यू है, उसमें भी केस लिखा हुआ है। ये देखें, टॉक्स में मैंने आपको कहा था कि आप सिर्फ ग्रीनबर्ग पढ़ो, काफी है। ये जो चीजें मैं बता रही हूँ एक्सटेंसिव में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीजें लॉन्ग केस में आती हैं। तो इस हिसाब से मैं लॉन्ग केस के हिसाब से बता रही हूँ कि ये आपको इन इन जगह से पढ़ना है। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड में भी अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। और कोर टेक्निक्स में सर्वाइकल लेमिनेक्टोमी और लेमिनोप्लास्टी जो है वो अच्छी लिखी हुई है। तो लेमिनेक्टोमी, लेमिनोप्लास्टी के टाइप्स, ओपन डोर, फ्रेंच डोर, ठीक है, ये आपको आने चाहिए, किस तरह करते हैं, ठीक है। और अलग अलग अप्रोचेस की कौन सी इंडिकेशंस या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं वो मैंने बता दी। तो ये लॉन्ग केस में अगर आता है। दूसरा ये एक दो चीजें कि जब भी आप कोई स्पाइन का केस कर रहे होते हो तो आप न्यूरो मॉनिटरिंग की बात जरूर करते हो, ठीक है। और ब्लड प्रेशर जो है इंट्रा ऑपरेटिव, आपको मीन आर्टेरियल प्रेशर शुड बी मोर देन 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी टू प्रिवेंट कॉर्ड इस्कीमिया। तो ये एक दो चीजें हैं जो आपको जो है हर स्पाइन के उसमें आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? वो नमाज ब्रेक कर ले सर की। हाँ, कर सकते हैं। डॉक्टर बाबर, आर यू हेयर? जी डॉक्टर मैं नमाज ब्रेक अभी करना है या एक स्टेशन में हाँ कंटिन्यू 5:15 करके? हो रहे हैं। असर नमाज यहाँ टाइम ब्रेक कम है? होता है ना, अभी मगरिब का टाइम हो जाएगा फिर। चलें, ठीक है, फिर 10 मिनट्स के बाद फिर करते हैं 5:20 पे, ओके। ठीक है। Okay, Dr. Atya. So, an Yes, 18-year ma'am. female presented with history of numbness and weakness of right upper limb for 6 months. So, Yes, ma'am. interpret the radiology. Okay, this is X-ray cervical spine with apical, not with thoracic outlet view, and there is right-sided cervical rib. Okay, on which side? Right side? Right, yes. Okay. So, your diagnosis is? On the basis of history and X-ray, it's most likely thoracic outlet, right-sided Why thoracic outlet? thoracic outlet syndrome. Secondary to cervical rib, Okay. because So, patient has a history of numbness, weakness in mainly upper limb, and then there is on radiology we have the rib, so that's why. okay. So, what's thoracic outlet syndrome? Sorry, I cannot define it. Actually, I didn't Oh, prepare talks. I have okay, cleared my okay. talks. Okay, okay, okay. Okay, what are the I different just joined types? because I thought long case has started. Okay, so what are the types of thoracic outlet syndrome? Oh, there is neurogenic and vascular. In neurogenic, the predominant factor symptoms are going to be related to the neurovascular deficit. While in vascular one, the patient will have symptoms like Raynaud phenomena and pallor of the skin or bluish skin tips, like that. Okay. I'm sorry, I haven't read this topic. No, you're going great. So, okay, Dr. Athiya, now tell me, are there any maneuvers, specific maneuvers by Yes, we which? do examination. We have to do the Adson test and the root test. We Okay, do that. okay, what is the Edson test? So
In the adsentate, we ask the patient to outstretch the arm, and then we ask them to move their head towards the side of the symptom, or towards the symptomatic side, and then we ask the we palpate the radial pulse and ask the patient to inhale and then stop breathing, and I think the radial pulses will decrease. Okay, and the other one, And on the Roos test. this is, yes, ma'am. In Roos, we ask the patient to bilaterally uplift their arms, and then we ask them to open and close their hands rapidly. So the symptom on the side of the compression, the side will become symptomatic. They will experience numbness, sensory deficits, and motor weakness, Okay. and aching of muscle. Okay. So, okay, you are right that this is a case of cervical rib and it's more on the right side. So, what are the treatment options? So we go with the we have to identify the underlying factor, whether it's because of the since in there we have a cervical rib, so we have to do the surgery and remove this bony deficit, remove this bony process, so it removes the compression. Any role of conservative treatment? Sorry, ma'am, I don't know. Okay, so how are you going to remove the cervical rib? So Well, we will be approaching this from yes. anteriorly. Just like we do the ACDF, we will admit the patient, do the investigations, then prepare the for the surgery. And a day before the surgery, we will inform the OT staff regarding the intraoperative monitoring of the peripheral nerves, and then we need of microscope. On the day of the surgery, we will NCR. So on the day of the surgery, after intubation position, we have to expose the clavicle. We have to move the head of the patient toward the left side and expose this clavicle region, and then we give a skin in after localizing the level. We have to give a skin incision and do the muscular dissection. Where is incision where? Sorry? Incision where exactly? Ma'am, this seems like a C7, T1 region. So you're giving I'm not sure, ma'am. vertical incision or a horizontal incision? I'll go with the vertical one since I'm more comfortable with it. Okay. Okay. It will provide a So better exposure. it will be medial vertical or kind of paramedian? Paramedian vertical. Paramedian vertical. Okay. Okay. So once you have identified and you have dissected the first rib, and still Yes, the ma'am. patient has persistent. We have intraoperative, we will also look at the scalene muscle, whether there is any hypertrophy of this. If there is any band adhesion to it, we have to also lyse it. We have to look for all the compression at 3 different levels, at the level of the bony, and then scalenus muscles, and then below the clavicle. Okay, very good. Okay, so any other approach except for this? Have you heard of transaxillary approach? Ma'am, I read it long time ago. I don't remember it. Okay. Sorry. Okay. So, if this patient has like recurrence of symptoms, like reproduction of same symptoms on the left side, so will you go Yes, ma'am. go for the surgery on the left side as well? Patient has the symptoms on the left side now. And previously there was no compression on imaging and testing. So I would like to first do all the testing again to see if I have missed something. Can you before identify doing the surgery. anything on left side in this patient at this X-ray? Yes, ma'am, there is slight. I don't know. It's a transverse process elongated. Yes, yes. Okay. Sometimes Yes, there ma'am. is no actual cervical rib, but there is an elongated transverse process that attaches via fibrous band. तो वो एक्सरे पे नजर नहीं आता आपको. तो Okay. कभी ये होता है कि फिर पेशेंट को लेटर ऑन सिम्टम्स होते हैं, आपको बोनी इतने मसले नहीं नजर आ रहे होते जितना आपको वह सॉफ्ट टिश्यू के मसले होते हैं. ठीक है डॉक्टर अतिया, यू आर वेरी गुड. लाइक आपने कहा कि मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी आपने अच्छा बताया. ठीक है, बस द फैक्ट इज कि बहुत रेयर चीज है, लेकिन रेयर चीज जब होती है तो वो आती बहुत है. ठीक है. हाँ जी. मसला ये होता है कि इस तरह का एक्सरे या इस तरह की चीजें हमें देखने की आदत नहीं है, तो हम उस नजर से देख नहीं रहे होते. तो एक तो गिव अवे ये होता है कि जब आपको एक्सरे
एपी व्यू सर्वाइकल स्पाइन का और पार्ट ऑफ चेस्ट एक्सरे जो है वो आपको दिखाएं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे सर्वाइकल रिब का ही पूछ रहे होते हैं। ठीक है, ये मैं एक बहुत Yes, ma'am. ले बात बता रही हूँ, लेमन वाली बात, लेकिन उस टाइम पे वैसे दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये उस टाइम बहुत ज्यादा जो है आपको क्लिक कर जाती हैं कि अगर मुझे आपको देखना होता है कोई पेशेंट है जिसको नमनेस वन साइड पे हो रही है, यंग पेशेंट है, ठीक है, और आपको ये वाली पिक्चर दे दी है, इस तरह की एपी व्यू दे दिया है, तो आप जरूर उसमें सर्वाइकल रिब को ढूंढो। मोस्ट ऑफ द केसेस में वही होता है जो आपसे पूछना चाह रहे होते हैं। फिर सारा वाइवा आपका स्टार्ट Okay. होता है थोरेसिक आउटलेट से। ठीक है, थोरेसिक आउटलेट क्या है, Yes. उसके कितने टाइप्स हैं, उसके कौन कौन से मैन्यूवर्स आप करते हो, ठीक है, सर्वाइकल रिब के जो है वो किस तरह आप मैनेज करते हो, कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं, ये सारी चीजें जो है फिर आपसे वो सारी वाइवा में पूछते हैं। लेकिन आधे से ज्यादा मार्क्स आपके होते हैं कि आपने आइडेंटिफाई की है पैथोलॉजी या नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स ये पैथोलॉजी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि ऐसे जहन में हमारे होता नहीं है। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि आप आइडेंटिफाई करो। उसके बाद जो है सर्वाइकल रिब जो है कभी कभी इतनी प्रोलॉन्ग होती हैं कि वो एज अ रिब नजर आती हैं, ठीक है, तो उसको सर्वाइकल रिब कहते हैं। बट अदर टाइम्स वो सिर्फ इलोंगेटेड C7 का प्रोसेस होता है, एग्जैक्टली सेम इस पिक्चर में। ठीक है, ये पूरी रिब नजर आ रही है और यहाँ पे सिर्फ इलोंगेटेड C7 का प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे वही मैंने कहा, कभी कभी सिर्फ ये इलोंगेटेड प्रोसेस होता है जो आपको वैसे लग रहा होता है कि ये कुछ कर नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे फाइब्रस बैंड अटैच होता है, ये वाला। ठीक है, ये मसला करवा रहा होता है। ठीक, दूसरा, जब आपके पास सर्वाइकल रिब आती है तो उसकी 4-5 टाइप्स होती हैं। ठीक है, 4-5 टाइप्स में सबसे पहला जो है कंप्लीट रिब। ठीक है, टाइप 1 इज द ओनली कंप्लीट रिब। ठीक है, टाइप 2, 3 एंड 4 दे आर इनकम्प्लीट रिब। ठीक, उसमें अगर आपके पास बस इस तरह से जो है, अगर पूरी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, ये क्लासिफिकेशन कोई पूछता है तो उसमें आप बता सकते हो कि टाइप 1 इज अ कंप्लीट रिब, टाइप 2 में इनकम्प्लीट रिब होती है जिसमें जो है पार्टली जो है वो है तो डिस्टल टिप फ्री होती है या फाइब्रस बैंड अटैच्ड होता है, ठीक है, या फिर शॉर्ट पीस ऑफ बोन होता है। ठीक, अब इसमें जो आपके पास पूछते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है, अपना जो है वो क्लॉडिकेशन उसकी थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम की। ठीक है, तो उसमें वेस्कुलर और न्यूरोपैथिक, ठीक है, या न्यूरोजेनिक। ठीक, वेस्कुलर में आर्टीरियल भी हो सकती है, वीनस भी हो सकती है। ठीक है, तो आर्टीरियल में जो है वही सबक्लेवियन आर्टरी की वजह से, वीनस में जो है सबक्लेवियन वेन के कंप्रेशन की वजह से, और दूसरा जो न्यूरोजेनिक होती है वो सिंपैथेटिक या पेरिफेरल नर्व्स की वजह से हो सकती है। सिंपैथेटिक में और आर्टीरियल में दोनों में रेनॉड हो सकता है। ठीक है, स्कीमिया, पेन, कलर चेंजेस हो सकते हैं। मेन हमारा जो है वो पेरिफेरल में ही आता है। ठीक है, तो उसमें अब यहाँ पे थोरेसिक आउटलेट के साथ आपसे ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस की सारी चीजें, प्रोवोकेटिव टेस्ट, डॉक्टर अतिया यू आर वेरी गुड माशाल्लाह। ठीक है, सो एडसन टेस्ट आपने सही बताया, रूस टेस्ट सही बताया। ठीक है, एक होता है मिलिट्री ब्रेस टेस्ट, उसमें जो है ऐसे मिलिट्री की तरह जो है वो पेशेंट को कहते हैं कि ऐसे जो है वो करे। दूसरा, कि उसी के साथ आप रेडियल पल्स पेल्पेट करते हो और उसमें वही डिफरेंस आता है, रेडियल पल्स कम होती है, डिमिनिश होती है, तो उसमें इट इज सजेस्टिव ऑफ थोरेसिक आउटलेट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का मैंने जो पूछा था, आप 4 to 6 months तक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे सकते हो अगर उसको माइल्ड सिम्टम्स हैं, जैसे सिर्फ नमनेस है, ठीक है, या जो है उसको थोड़ा बहुत जो है वो पावर उसका इतना वीक नहीं है, जैसे ग्रिप उसकी 4+ है क्या, तो आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट 4 to 6 months तक दे सकते हो। अगर नहीं बेहतर हो रहा तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप फर्स्ट रिब रिसेक्शन करो, और स्क्लेनेक्टोमी का बहुत अच्छा आपने जिक्र किया, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज के मसले भी होते हैं, तो आप पार्शली जो है वो स्केलिंग मसल्स को, एंटीरियर मिडिल स्केलिंग मसल्स को आप करते हो थोरेसिक आउटलेट में। अब उसमें दे आर मल्टीपल अप्रोचेस, कुछ होती हैं अप्रोचेस जिसमें आप सुप्रा क्लेविकुलर या इंफ्रा क्लेविकुलर जाते हो। एक आपकी जो है ट्रांस एक्सिल, इस तरह याद रखें कि एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर अप्रोचेस। एंटीरियरली यू कैन गो अबव द क्लेविकल और बिलो, सुप्रा और इंफ्रा क्लेविकुलर, लेटरली ट्रांस एक्सिलरी, पोस्टीरियरली सबस्कैपुलर। ठीक है, वो डिपेंड करता है हर पेशेंट की अपनी जो है वो डिफरेंट एनेटमिकल जो है वो मसला क्या है जिसको आप एड्रेस कर रहे हो। दूसरा, एडवांस में जो है वीडियो असिस्टेड वैट्स आ गया, ठीक है, एंडोस्कोपिक असिस्टेड भी ट्रांस एक्सिलरी अप्रोचेस आ गई। अब इसमें जो है क्या क्या गोल्स हैं और
किस अप्रोच की क्या वो है एडवांटेजेस हैं। जो ट्रांस एक्सिलरी अप्रोच होती है, ठीक है, उसका फायदा ये कि एंटायर फर्स्ट रिब आपको उससे नजर आती है। न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स जो है इट इज अनहिंडर्ड बाय न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और इसका इंसिशन भी हिडन होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉस्मेटिक का मसला होता है सुप्राक्लेविकुलर, ट्रांस एक्सिलरी की इंसिशन जो है वो हिडन आपके पास होती है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस यहाँ है कि ये आपको न्यूरल एलिमेंट्स इतने अच्छे नहीं नजर आते, ठीक है। कोई मीडियल पैथोलॉजी है अंदर की तरफ जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल पेनकॉस्ट ट्यूमर है क्या, तो वो मीडियल पैथोलॉजी आपको इतनी अच्छी नजर नहीं आती है, ठीक है। डीप विंडो होता है। और T1 या इंफीरियर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी के चांसेस होते हैं एक्सिला के थ्रू। फिर आपके पास आती है सुप्राक्लेविकुलर अप्रोच। एंटीरियरली जो है वो फेवर ज्यादातर सुप्राक्लेविकुलर अप्रोच ही फेवर करते हैं। तो आप जो सर्वाइकल रिप की जब बात हो तो आप सुप्राक्लेविकुलर अप्रोच का ही नाम लोगे ज्यादातर। इसमें ये होता है कि आपको सारा प्लेक्सस, थोरेसिक आउटलेट, ठीक है, फर्स्ट रिब, ये सारी चीजें, इवन फाइब्रस बैंड्स जो होते हैं स्केलिन मसल से सारी आपको यहाँ से नजर आती है इजीली, ठीक है। तो आप बैंड्स भी यहाँ से डिवाइड कर सकते हो, स्केलिन को भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। रिब को भी रिसेक्ट कर सकते हो, इवन डॉर्सल सिंपैथेक्टोमी का भी आप कर सकते हो, लेकिन इसका नाम नहीं लेना इस पे फिर जो है। लेकिन जो मेन इसके फायदे हैं वो ये है कि आप रिब निकाल सकते हो, आपको थोरेसिक आउटलेट का अच्छा व्यू होता है, न्यूरोवेस्कुलर बंडल आपको अच्छा नजर आ रहा होता है, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सस आपको अच्छा नजर आता है, इसलिए आप उसकी इंजरी से मतलब बचा सकते हो जो चीजें अंडर विजन है। फाइब्रस बैंड्स को निकाल सकते हो, यहाँ से स्केलिनस जो है स्केलिन मसल्स को आप कर सकते हो डिवाइड। तो उससे जो है ज्यादातर फेवरेबल हमारे लिए यही होती है। जो पोस्टीरियर सबस्कैपुलर अप्रोच होती है वो मतलब उसके बहुत लिमिटेड इंडिकेशंस हैं, ठीक है। वो तब करते हैं जब एंटीरियर अप्रोच से फायदा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मसला यही है कि एक्सटेंसिव मसल डायसेक्शन होती है, और अक्सर जो है वो स्कैपुला की जब आप उस जगह पे डायसेक्शन करे होते हो तो स्कैपुलर ड्रूपिंग हो जाती है। तो ये ज्यादातर जो विंगिंग ऑफ स्कैपुला इंस्टेबिलिटी आप नहीं करते हो, ठीक है। ये वाली पिक्चर के सुप्रा क्लेविकुलर अप्रोच आप कैसे करते हो, ठीक है। ये इंसिशन होती है, क्लेविकुल को फॉलो करते हो, ठीक है। उसके बाद ये आपकी स्केलिन मसल्स है, ये ब्रेकियल प्लेक्सस के ट्रंक है, अपर मिडिल एंड लोअर, ठीक है। ये अपर मिडिल एंड लोअर, ठीक है। यहाँ पे ये जो है स्टार बना हुआ है, if I can show you, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रिब, मतलब सर्वाइकल रिब, सॉरी, ठीक है। ये सर्वाइकल रिब है, ये सर्वाइकल रिब हमने निकाल दी, ये स्पेस खाली हो गया, ठीक है। थोड़ा बहुत स्केलिन को भी जो है यहाँ पे उसके कुछ मसल फाइबर्स काटे हैं। तो अब जब ब्रेकियल प्लेक्सस की जो है ये सारी जो ट्रंक्स हैं, अपर मिडिल लोअर ट्रंक, दे आर फ्री, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस दो चार यही हैं जो आपको आनी चाहिए, जिसमें ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी, जो आसपास चीजें पड़ी हुई हैं उनकी इंजरी हो सकती है, फ्रेनिक नर्व की, सबक्लेवियन आर्टरी, वेन्स वगैरह, ये सारी चीजों की इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो आसपास जो भी थोरेसिक आउटलेट में चीजें हैं उनकी सबकी इंजरी का बताना है। पढ़ना कहाँ से है, ये ज्यादातर आता शॉर्ट केस में या टॉक्स में आएगा, लॉन्ग केस में तो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मसला ये कि ग्रीनबर्ग में अच्छा लिखा नहीं हुआ, इसलिए मैंने एक दो एडिशंस और लिखी हैं इसमें। जो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है और ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी का न्यूरोसर्जरी केस रिव्यू में अच्छा लिखा हुआ है, और ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड में जो है वो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, उसमें भी अच्छा लिखा हुआ है। बाकी ग्रीनबर्ग में है एक पेज का लिखा हुआ है, लेकिन वो इतना इनफ नहीं है, इसलिए ये जो दो बुक्स हैं इनमें से अगर आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो ओरिएंटेशन हो जाएगा। रेयर टॉपिक है, नहीं आता, लेकिन अगर कहीं रखना होता है तो ये आपको पिक्चर जरूर देते हैं। तो कभी कभी जो है अगर आता है तो एटलीस्ट टॉक्स के हिसाब से जो चीजें मैंने बताई, आई थिंक दे आर मोर देन इनफ। आपका टॉक्स का स्टेशन इंशाल्लाह इससे क्लियर हो जाएगा। कुछ पूछना हो डॉक्टर अतिया, यू आर वेरी गुड। Thank you, ma'am. अच्छा, कुछ पूछना हो तो ठीक है, वरना फिर नेक्स्ट उस पे चलें। डॉक्टर बाबर, आर यू हियर? जी जी। ओके, आई एम स्टॉप शेयरिंग। दो टॉक्स के बाकी स्टेशन करते हैं फिर मगरिब नमाज का ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद फिर शॉर्ट केसेस, सही। Okay, so who is going for the next session?
हाँ जी. Any volunteer for the next station, toxic station? Can I try it? Yes, Dr. Manik, please. Okay, so read the scenario. 55 years old male, non-present arthritis, prevented also lung examination, taken as motor science, balance, online exam positive. Yes, sir. All right, so read the radiology. Can you describe it? So the image on the right side is T2-weighted MRI from craniocervical junction, where we can appreciate there is a retroflexion of odontoid with the crowding at the foramen of magnum and kinking of cervicomedullary junction. And there's some core signal changes as well. And in left side of the image, we can appreciate there is a odontoid is at the level of foramen magnum, and the clivus looks more horizontal rather than vertical. So I would suppose this is basilar invagination. Why are you labeling it as basilar invagination? Is there any criteria for that? Yes, sir. I'll draw lines in these images to find out the position of odontoid with respect to foramen magnum. Some of the common ones are McRae line, Chamberlain line, and McGregor line. And also, I'll draw another line between the clivus and axis. So I'll measure the clivo-axial angle. And then, based on this, Which one is the most important line amongst them? Which one is the most important? Chamberlain's and McGregor line. So name any one of them. So if we have to from McGregor line, it's from Bayesian to office here. And Right. Chamberlain line is from hard palate to office here. Okay. So how many types of basilar invagination are there? There are two types based on stability of C1, C2, as well as compression from the anterior mass. And based on etiology, it can be congenital and acquired. Okay. What other investigations you will order in this patient? I'll order flexion extension X-ray of craniocervical junction. And yes, sir. And probably I'll look for yeah, I think that will be enough with the MRI and CT. All right. So how will you manage this patient? So based on dynamic X-ray of craniocervical junction, if there is no instability and if the lines are consistent with vascular invagination, and if the clivo-axial angle is higher, I will consider this as a retroflexion of odontoid with a platybasia. So my goal would be expanding the foramen magnum based on these defining the types. So I'll type this one as a type 2, and I'll do anterior decompression. And if the flexion extension X-ray shows instability, I will also do posterior fossa decompression of the fixation. Considering this type 1 basal invagination, would you do anything else before going for the surgery? In terms of, I didn't get the question, sir. If it is type 1 of basal invagination, Yes, sir. would you do anything, any maneuver before going for the surgery? Definitely. Yes, sir. Try to do reduction test, toxin reduction.
If it's reducible, then I'll go posterior fixation. If it's not reducible, then anterior decompression is needed. So How will you do the fixation? posterior, Yeah, posteriorly. I'll do C1, C2 fixation. So, and if using Boyle's arm statement, Can you tell the steps of surgery, C1 and C2 fixation? I'll make a incision from inion to C3, the spinous process of C3. So after making incision, prior to making incision, I'll order neuromonitoring, SSAT and MAT. And then once I do make incision, I'll do subcutaneous, and then once I find the midline plane, I'll do a vascular dissection and expose from inion to C3. While I'm exposing, I'll be careful about not crossing more than 15 millimeter at C1 level to avoid vertebral injury. And once I expose the C1 and C2, I'll prepare for C1 lateral mass screw, which is usually done either in the posterior arch or just below the posterior arch. Before that, I'll have to make hemostasis of C2 venous plexus and expose the C3 nerve roots. And then I'll drill a pilot hole in a C1, which will be medially 15 degree and craniocaudal rostally 30 degree angulation. And then I'll do same thing on the opposite side as well. And for C2 screw, I can choose either transpedicular or pars screw. For transpedicular, I'll choose lateral to medial angle. And then I'll use rod to fix the screws in that place. So, All right. So what could be the possible complications? What are the common complications in this procedure? one of the fearful complications in C1, C2 is vertebral artery injury. And another post-surgical complications are early and late. Early, usually patient might complain about occipital neuralgia. Late, there might be failure of hardware. So, Okay, Dr. Manik, you were good. So you answer all the questions. Can you name these lines? This is a bonus question. Number one is Wickenham line. And Right. number two is Chamberlain's line. Number three is McRae. Number four is McGregor. And number five is, I think, BBI, basal interval. And number six, I don't know what is that. Other poster, a line of Swiss chuck, something. Okay, so how do you differentiate type 1 and type 2 on the basis of these lines? So I think type 1 and type 2 based on this McRae and Chamberlain lines and BDI as well as Wickenham's. If odontoid process above the BDI, as well as if odontoid is more than 5 millimeter above Chamberlain line, or if 3 millimeter above McRae's line, it's most likely type 1. So. Right. It's very good that you remember all these values correctly. Let me make it easy. McRae's line, it extends from the clivus to the opistheon,
And this is the most important line when you're diagnosing the basilar evagination. The odontoid should never get never get above it. Okay, so how do we differentiate between the type 1 and type 2 is in the type 1 odontoid is going to cross all these lines, that is the Chamberlain's line as well as the Macrae's line and the Wakenham's line, all of them. But whereas in the type 2, when it is associated with the Chiari malformation or platybasia or the smaller posterior fossa, so in that case, the odontoid process is just going to cross the McGregor's line, not the Macrae's line. Yes. Chamberlain, it is only going to cross the Chamberlain's line. That is the main difference between both. Okay, sir. All right, so these are the type 1 and type 2. As we can see in the type 2, it is crossing the Chamberlain's line, but it is not going inside the Macrae's line. Yes. These are the examples. This is type 1, whereas this is type 2. In this, we can see it is associated with the Chiari, but Macrae's line is not being crossed by the odontoid process. Now for the treatment, this is an algorithm that first of all, you have to see if it is reducible or not reducible. As I asked you, would you do any maneuver before proceeding for the surgery? So you need to put the traction. Obviously, you have to rule out if the patient has the occipito-atlantal dislocation. In that case, occipito-axial dislocation, atlanto dislocation, sorry. In that case, you cannot put the traction. Otherwise, you have to put the traction. And then you have to see if it is reducible or not. If it is reducible and stable, you can leave it. Otherwise, you need to go for the fusion if it is unstable. Whereas if it is irreducible, you have to go for the compression. For the compression, we have two options. Either we can go for the ventral or the dorsal approach. The ventral approach, it is not a very popular approach, and only if the examiner takes you there, so name it transoral approach. Otherwise, go for the dorsal decompression. It is the treatment of choice, especially in type 2. Just the posterior decompression is going to relieve the signs and symptoms of the basilar evagination. Otherwise, if it is type 1, you need to fixate the C1 and C2. For C1 and C2 fixation, there are different options. Either you go for the instrumentation or you go for the wiring. Wiring, again, it's not a very popular or good procedure. Better procedures are the instrumentation. For that, you will fixate the C1 and C2. For that, you need to remember the different trajectories and where do you place the screws. Okay, in the C1, the easiest way to locate where will you place the screw, it is the middle point, exact middle point in the lateral mass, and then the trajectory would be 17-degree medial and 22-degree. It is going to be rostrally placed. Anterior tubercle, you have to go towards the anterior tubercle. For C2, there are different approaches. You can either go transpedicular, or you can go for the transarticular or within the lateral mass. So for that, again, these are the some of the trajectories for the subaxial fixations. You need to remember all of these, the angles and the entry points for the subaxial approaches. Okay, let's go for the last station, TOACS station.
who is going to attempt the last station? Again, it's an easy one. Okay, Salman. Yes, sir. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Okay, let's start it. Kindly read the scenario. Okay. 30-year-old female presented in outpatient department with complaint of occipital headache aggravated with straining neck pain that radiates to both upper limbs along with numbness. Upper motor neuron signs in lower limbs and lower motor neuron signs in upper limbs plus cerebellar signs positive. Okay, right, sir. Okay, so what is the impression? What is your diagnosis? Sir, by seeing the pictures, the MRI, I'm saying that there is cerebellar herniation into the spinal canal as well as kinking of the medulla, and I think so. It's a Chiari malformation. All right, so that was going to be my second question. Can you read the MRI? Describe the MRI. Okay. First one is the CT, or it's no, sorry, it's an MRI. Second one, first one. Okay. In the first picture, in the first, this is MRI or the CT? Sir, it's an MRI because the bone is not showing like hyperdensity, the skull bone. Right. So it's an MRI. The coronal sagittal section, in which there is evidence of medullary kinking along with cerebellar herniation into the spinal canal via the foramen magnum. And in the second view, in the second picture, that is the T1 weighted image, we can also see a syrinx starting from C2 to C7. C2 to C6, C7. All right. So, what is the cause of syrinx here? Sir, the cause of syrinx here, I think, is the compression of the compression that is causing by the cerebellar herniation and the medullary kinking. So it is creating a cavity in the cord. I think so. Do you know any other causes of syrinx formation, syringomyelia? Any other causes? Sir, it's most common by Chiari malformation. Yes. And otherwise, it could be acquired, like any injury to the spinal cord, or it could be in spinal tumors, or like if there is any malformation like arteriovenous malformation or a spinal cord irritation like an arachnoiditis and something like that. What are the different theories for the formation of syrinx or syringomyelia? No idea, sir. Okay, so you need to read them. Right, sir. At least दो आपको आनी चाहिए, ठीक है? Water hammer theory, and then there is Williams theory. There are plenty of them, so at least you should know two of them.
They ask in Right, detail how does the syrinx formation takes place. right, sir. So, what type of carry is this? Carry cerebral. Sir, it's carry type 2, sir. You sure? Wait, sir. Yes, sir, it's carry 2, sir. Why you are saying it is carry 2? Sir, because in carry 2 malformation, there is herniation of the cerebellar vermis. Um, 2, 1. सर ये कुछ गड़बड़ हो गया मेरे से. ओके, मुझे ये बताएंगे डिफरेंसेस क्या हैं टाइप 1 और टाइप 2 में? ओके सर. 5-6 मोटे मोटे डिफरेंसेस बता दें. जी सर जी, मैं थोड़ा सा इसको सर रिकॉल कर लूँ. एक्चुअली ये टॉपिक एक ऐसा है जो हम स्टार्ट में फिर पढ़ते हैं और फिर उसके बाद फिर हम कहते हैं अच्छा चलो हम एंड पे इसको दोबारा देखेंगे. अच्छा सर, टाइप इजी ना इन ले इस टाइप टॉपिक. जी जी जी. in type 1 there is cerebellar tonsil herniation into the foramen magnum, and in type 2 the vermis also herniates along with the tonsil, and type 1 yes, type 1 leads to syringomelia, and type 2 is often associated with a myelomeningocele. And yes sir, in type 2 there is दो चीजें हो गई, सेरिबेलर टॉन्सिल हो गया और वो हो गया सिरिंजोमिलिया हो गया. सर मेन मेरे जहन में फिलहाल यही दो आ रहे हैं. व्हाट इज कैरी 1.5? सर अब आप सख्त एग्जामिनर बन रहे हैं. सर नहीं, मुझे मेरे सर ये सारा कुछ बस वो है ना, वो गड़बड़ हो गया, इसको दोबारा रिवाइज करने वाला है सर, ये कैरी वाला जो है सारा. अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि और क्या इन्वेस्टिगेशंस इसमें करवाएंगे आप पेशेंट में? कोई एक स्पेसिफिक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कैरी में MRI हो गया है हमारे पास, और सर इसमें हम जो है ये, इसमें क्योंकि पेशेंट को साथ ये रेडिकुलोपैथी भी आ रही है, अपर लिम्स में नमनेस आ रही है, तो सर हम जो है MCS एंड EMG है वो सर करवा सकते हैं पेशेंट का. वो तो सब कैरी की वजह से सिम्टम्स. ओके, हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट दिस पेशेंट? सर आई थिंक मेरा ख्याल है कि इसको सर हम कंजर्वेटिव और सर्जिकल दोनों में कर सकते हैं. कंजर्वेटिव हम तब कर सकते हैं कि नहीं सॉरी सर, इसको हम सर्जिकल ही करेंगे. इसमें ये जो फोरामेन मैग्नम है इसको सर हम जो है ना वाइड करेंगे, इसको कहते हैं फोरामेन decompression at the level of foramen magnum, or the syringomelia resolves spontaneously. सर्जरी को हम क्या कहते हैं? इज देयर सर्जरी पर्टिकुलर को टर्म फॉर इट? एक मिनट सर. foramen magnum decompression. नहीं सर, मेरे जहन में नहीं आ रहा ये. फोरामेन मैग्नम डीकम्प्रेशन तो मेरे जहन में आ गया, लेकिन ये इसका स्पेसिफिक नेम सर मेरे जहन में नहीं आ रहा. ओके, सो इट्स सब ऑसिपिटल
decompression. Suboccipital decompression. Suboccipital decompression. Right, sir. Right. Steps बता दीजिए सर्जरी के. Surgical steps. Okay. इसमें sir, first of all, we make an incision starting from the posterior, from the occipital protuberance, Right. To the C2 vertebra, and after subcutaneous dissection and muscle separation, we go for a laminectomy at the level of C1, and also we will remove a small portion of the occipital bone. Then the बोन कितनी रिमूव करेंगे इसमें हम ऑक्सीपिटल बोन? नहीं सर, नो आइडिया. क्रेनियोटमी करेंगे, क्रेनिक्टमी करेंगे यहाँ पे हम? नहीं सर, क्रेनिएक्टमी करेंगे सर, क्रेनियोटमी नहीं करेंगे, क्रेनिएक्टमी करेंगे. उसकी डायमेंशंस याद होना जरूरी है. ओके, राइट सर. यूजुअली इट इज 3 by 3 सेंटीमीटर. 3 by 3 सेंटीमीटर, और राइट. लेमिनेक्टमी हम कितनी करते हैं C1 की? लेमिनेक्टमी सर, क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बचा रहे हैं? सर इधर हमें जो हमारा क्या उसे कहते हैं, वर्टिब्रल आर्टरी है सर, उसको हमने सेव करना है. और उसके बाद जी सर, वर्टिब्रल आर्टरी को सेव करना है. इसमें हमें मिड लाइन से 1 सेंटीमीटर ऑन द ईदर साइड, इससे ज्यादा नहीं जाना होता है. दैट इज द सेफ कॉरिडोर. Okay, right. Okay, now so bony dissection is done. What would be your next step now? Sir, next is the opening of dura. Opening of dura, and to create a space for the cerebellum. ड्यूरा के अलावा एक और क्या स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे छुड़वाना होता है? ड्यूरा के अलावा सर एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे सेरिबेलम को जगह देने के लिए? टेंट सर? नहीं, टेंट ऊपर चले गए. एडिशन बैंड्स यहाँ पे जो होते हैं, ओके, अराउंड C1. ओके, रिलीजिंग देम इज वेरी इंपॉर्टेंट सर्जिकली. ओके. क्लोज कैसे करेंगे सर? आफ्टर सर इसमें सर ड्यूरा प्लास्टी करेंगे सर, पैच लगाएंगे इसमें, और ड्यूरल पैच और क्या यूज मतलब हम कर लगा सकते हैं? सर हम इसमें आर्टिफिशियल ड्यूरा सर यूज कर सकते हैं. बाकी हम सर इसके अलावा इसमें सर जो वो है पेरियोस, हाँ पेरिक्रेनियम, सॉरी पेरिक्रेनियम यूज कर सकते हैं. पेरिक्रेनियम फेशियल एटा सर हम यूज कर सकते हैं इसको क्लोज करने के लिए सर. ओके, सो व्हाट आर दी कॉम्प्लिकेशंस पोस्ट ऑपरेटिवली? कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? सर major complication is post-op bleeding, major complication infection, bleeding, and if we move to specific complications, it could be a brain stem or cord injury. ठीक है, और CSF leaks सर हो सकते हैं इसमें, और प्रीवियस जो सिम्टम्स हैं पेशेंट के, जो नम्बनेस है, ये सर एग्रेवेट कर सकती है, नम्बनेस बढ़ सकती है, वीकनेस हो सकती है सर पेशेंट को.
ठीक है। अच्छा, इसमें पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में दो कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिस पे फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है एग्जाम। वन इज द CSF लीकेज। So CSF how you leakage, are yes. going to manage the CSF leakage? Sir, if there is a CSF leakage, we can do a lumbar drain, sir. Okay. Before that, we'll do the LP. Yes, we will do the LP or Dressing position of the patient. G, sir. And AZM. yes. Okay, yes. A lumbar puncture, dressing, AZM to decrease production of CSF, a lumbar drain, and if all fails, then a re-exploration. Right. जो lumbar drain है itself, it's a cause of infection and Yes, not a very good procedure. मतलब there are high chances of getting it blocked, infection. So right, sir. अगर सारे measure से repeated LP से lumbar puncture से और सारे measure से नहीं होता, then the next option is going for the re-exploration. Right, sir. Right. ठीक है, Dr. Salman, you did fairly good. Not very good Thank or excellent, but you need to go through this you, sir. topic again. Ji, Lightly, sir. that carrying information is a very important topic. Exactly, sir. Exactly. Thank you, sir. Okay, so these are syringomyelia. There are certain theories for the formation of it. आप बुक में से पढ़ें, ग्रीनबर्ग में से फॉर दी सर्जरी के लिए आपको क्रेनिक्टमी की डायमेंशंस पूछ सकते हैं। इसमें सर्जिकल स्टेप्स जो भी हैं, जितने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कौन से यहाँ पे बचाने होते हैं, Right, लेमिनेक्टमी sir. लेमिनेक्टमी कितनी करते हैं, जस्ट C1 की करते हैं या C2 की भी करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द MRI के जो हर्निएशन है वो टॉन्सिल्स की कितनी है, अकॉर्डिंगली हम Right, करते sir. हैं। सेकेंडली, सर ये टाइप 2 ही था ना? नहीं, दिस वाज टाइप 1 जो आपको मेडुलरी किंकिंग लग रही थी, नो, टाइप दैट वाज 1. द लोअर डायलेटेड पोर्शन। ओके, इवन ओके, इवन इफ ओके. अगर इसमें मेडुलरी होती तो दिस वुड हैव बीन 1.5 कैरी बिकॉज इट हैज प्रेजेंटेड द अडल्ट। ओके. यस, क्योंकि एडल्ट में है तो इसमें वो जो है मेनिंगोमाइलोसील तो नहीं होगा, तो ये मोस्ट प्रोबेबली फिर ये 2 नहीं है, 1 ही होगा। यस, या एग्जैक्टली 1 सर, या राइट. 1.5 हम इसको लेबल कर सकते 1 हैं। या 1.5. ओके सर, ओके. ठीक है। अच्छा, इसमें ड्यूरा, नॉट ओनली ड्यूरा बट एडिशन बैंड्स को जो है छुड़वाना जरूरी होता है। ठीक एंड है. दो कॉम्प्लिकेशन जिसके मैं जिक्र कर रहा था, वन वाज द CSF लीकेज। CSF लीकेज के लिए सारे मेजर्स हम करेंगे। सेकंड थिंग वाज राइट द सर. परसिस्टेंट सिम्टम्स इवन आफ्टर द सर्जरी। सो उसमें पूछते राइट हैं सर. कि व्हाट विल यू डू देन। राइट. ओके. तो सर क्या करेंगे सर परसिस्टेंट सिम्टम्स के लिए? उसमें उसमें अभी. डिपेंड करता है, इफ द पेशेंट प्रेजेंट्स विद द डोमिनेंट सेरिबेलर सिम्टम्स, सो हम हम्म. शेव कर सकते हैं टॉन्सिल्स को, पार्ट ऑफ टॉन्सिल्स उसको हम ओके, शेव कर ओके. सकते हैं। राइट, राइट, Or राइट. if the patient has the long tract signs in the limbs, so then we राइट. have to rule out it is due to the syringomyelia. Is हम्म. it being symptomatic? In that case, we need to deal with the syrinx. फिर syrinx का राइट. पूछते हैं कि उसके लिए क्या हम प्रोसीजर्स कर सकते हैं। राइट सर, राइट. ओके. थैंक यू सर. ठीक है, ये डायमेंशंस दी हुई हैं इसमें। 3 into 3 centimeter. Okay, that's Right, all right. from my side. Thank you, sir. So we'll take a break for namaz and then we'll start short cases. Let's meet after 10 minutes.